Welcome to all. Today we will discuss about the mode. Okay? Mode. Achha. In mode, there are also three series are there: individual series, discrete series, and continuous series. Number one, individual series. Individual series. Write down. X equal to 5, 6, 3, 5, 4, 5. At first, arrange the item into the ascending order. Okay? Arrange the item. That is the 3, 4, 5, 5, 6. 3 5s are there. Acha. Here, whenever you will calculate the mode, the symbol of mode is Z. Okay? Mode equal to what is the highest time of repetitive item from this number? 5. That's why here mode is the 5. Clear? Clear? Which is the maximum repetitive item, that is the mode. Okay? That's why mode is the 5. And likhiyo je. Why? That this symbol is the because of. Okay? Because 5 is the maximum repetitive item. ये लिखना होगा, नहीं तो wrong. Repetitive item. Okay? Copy it. Because 5 is the maximum repetitive item. Clear? So, next, write down. Another question. Calculate mode from the following information. Calculate mode from the following information. Write down. All of you write all the things of statistics on your fair note, and all the HW also must written in the fair note only. Clear? Next, x equal to 5, 7, 3, 7, 4, 7. 7 because it is the maximum repetitive item. ये भी लिखना होगा. विश्व समझ में आ रहा है? Completed? Completed? Now, discrete series. Individual series completed. Discrete series. ओके, डिस्क्रीट सीरीज में x और क्या होगा? f 10, 20, 30, 40, 50. ओके, f इक्वल टू 5, 6, 5, 7, 4, 3. Here, listen carefully. Here, whenever you will calculate the mode from the following information, then at first concentrate which is the maximum frequency, which is the highest frequency, which is the highest frequency? 7. अच्छा, 7 के सीधे क्या है? 30. Therefore mode equal to 30. Clear? Any doubt on it? जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका सीधा जो वेरिएबल है वही आंसर है. क्लियर? क्लियर? लिखना होगा यहाँ पर मोड इक्वल टू 30. लिखो ब्रैकेट रे. Why? Because although that's it has the highest frequency. ये भी लिखना होगा, सिर्फ सिंगल सेंटेंस आंसर. It has the highest frequency. Clear? It has the highest frequency. Completed? Subham, completed? Next, write down another question. Calculate mode from the following information. Calculate mode
from the following information. Okay, write down x equal to 20, 40, 60, 80, 100. F equal to 1, 2, 3, 4, 5, 100. Okay, answer is the 100. Why? Because लिखो यहाँ पर, because it has the highest frequency. Clear? Any doubt on it? Okay. हाँ एमती केवे रहियो नहीं. Okay. तापे अलगा सबुड़ा आसियो आगु. Next, continuous series. Continuous series. X equal to 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. F equal to 6, 4, 5, 9, 3. Okay. Then what to do? Here you have to put a simple formula, then calculate the mode. Okay, then mode equal to here L1 plus, write down, F1 minus F0 into 2F1 minus F0 minus F2 into I. Okay, mode equal to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I. Clear? अच्छा, तो F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है. देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 9, वो राउंड अप करना है. ये हो गया F1, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये हो गया 9 हो गया F1, 9 हो गया F1. उनका ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी वो हो गया F0, नीचे वाला फ्रीक्वेंसी हो गया F2. क्लियर? एनी डाउट ऑन इट? ये हो गया L1, ये हो गया L2. क्लियर? अच्छा, तो I क्या होगा, L2 माइनस L1. गणेश, ओके, एनी डाउट ऑन इट? अच्छा, देन पुट द फॉर्मूला. L1 इक्वल टू हाउ मच, 60. I इक्वल टू हाउ मच, 20. नेक्स्ट F1 इक्वल टू हाउ मच, 9. F2 इक्वल टू हाउ मच, 3. F0 इक्वल टू हाउ मच, 5. नेक्स्ट पुट द फॉर्मूला. That is का 60 plus 80 minus 60 divided by 2 into 9 by 5 minus 3. हाँ ये सॉरी F1 minus F0, 9 minus 5. हाँ I equal to 20. Clear? F1 minus F0, ये L2 minus L1 नहीं है, F1 minus F0. That is equal to 60 plus 4 by 18 minus 8, that will be 10 into 20. 10 2 जा 60 plus 8, that is 68. देखो आंसर क्या आना चाहिए, 60 से 80 अंदर में आना चाहिए. आंसर हो गया 68. Therefore mode equal to 68. Copy it. Completed? Now completed. Now write down another question. Calculate mode from the following information, whereas x equal to 0 to 100, 100 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500. F equal to 5 6 9 4 3. क्या होगा, आंसर निकालो.
जल्दी जल्दी निकालो। फॉर्मूला पहले लिखो फिर बाद में आंसर। 237। तो 37.5 ओम। ओके गणेश लिपुन फॉर्मूला कहाँ है? Completed? शुभम 237 सुमय completed? Two 37.5 is the correct answer. Okay, those have committed wrong, then calculate again. It's the very simple process. Simply formula होगा L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I. Sumaya completed? At first here you have to write this is the F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2. क्लियर? अच्छा फिर अच्छा ये मैं इरेज करके ये लिख देता हूँ 9 6 4 3 8। फिर करो ये सॉल्व करो जल्दी। हाँ ये सॉल्व करो जल्दी जल्दी, न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो ये। कितना है ओम? 150 रॉन्ग रॉन्ग। संजय विश्व सेवेंटी फाइव। हाँ मैं भी करेक्ट 75 करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया F1, F0 क्या होगा, आगे नहीं है कुछ तो क्या होगा 0। ओके अगर यहाँ होता तो F1 तो क्या होगा, F2 क्या होगा 0, क्योंकि उनके नीचे कोई नंबर है ही नहीं। तो ये हो गया ऐसे होता था, ये तो क्या होगा, ये F0 होगा, ये F1 होगा, ये होगा। अगर ऐसा ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता तो ओके क्लियर। ओके ये सब प्रैक्टिस करो। ओके थैंक यू।